Class 7, vamos a aprender español. So today we're going to do a very interesting Spanish grammar topic of reflexive verb. So come on, let's get going. ¿Qué vamos a hacer? So what all are we going to cover today? Number 1, हम cover करेंगे los verbos reflexivos. So like what are reflexive verbs in Spanish? Number 2, we will understand la conjugation. How do you conjugate the reflexive verbs? 3, we understand the difference between a reflexive and a non-reflexive verb. Okay? And 4, we learn how to write our daily routine. Mi rutina diaria en español. Okay? So let's start with the first topic. What are reflexive verbs? होते क्या है reflexive verbs? So reflexive verb is one जहाँ पर subject and object are the same. मतलब यहाँ पे the action reflects back on the subject. So let's look at two sentences जो आपको better explain करेंगे difference. So sentence number 1. I wake up my brother at 8 a.m. So यहाँ पे action क्या है बच्चों? Waking up. लेकिन who am I waking up? My brother. तो यहाँ पे subject क्या अलग है, object अलग है. So is this a reflexive verb? No. How will I say that in Spanish? Despierto a mi hermano a las 8. So I wake up my brother at 8 a.m. Now look at sentence number 2. I wake up myself at 8 a.m. I can simply say I wake up at 8 a.m. So here the action of waking up, ये किसके लिए यूज किया गया है? मेरे लिए. So the action is reflecting back on me. That means यहाँ I have to use a reflexive verb. So how do I do that in Spanish? I say me despierto a las 8. So I wake myself up at 8 a.m. Okay? Now, how to use these reflexive verbs in a sentence? 1. We have to understand कि एक reflexive verb in Spanish उसके साथ हमेशा ये pronoun s attach होगा, चाहे towards the end of the verb या we put it in the beginning. So हमेशा you will find the pronoun s, and that is why इस pronoun को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक reflexive pronoun. For example, you have despertarse, levantarse, vestirse. So the sir attached to the verb ये आपको signify कर रहा है कि यहाँ इसका reflexive sense. So ये pronoun indicate करता है that subject is doing the action on himself or herself. So the action is going to be reflected back. Thus एक reflexive verb जब भी आप conjugate करेंगे उसके two parts होंगे बच्चों. 1, the reflexive pronoun. 2, the verb itself. Okay? So अब हमें समझ आ गया है कि reflexive verbs होते क्या है. तो now let's look at how to conjugate the reflexive verbs in Spanish. So before that, इन दो parts को जरा मैं आपके लिए break down कर देती हूँ. How do you conjugate the reflexive pronoun? जी हाँ, हमें इस reflexive pronoun को भी conjugate करना पड़ता है. So generally we call this s. हमेशा आप verb के साथ जब एक infinitive form में verb के बने आप हमेशा you will find s attached to the verb. But what happens with different subjects? With you we write ma. With tu we write ta. With él, ella and usted we write s. With nosotros, nosotras we write the pronoun nos. Vosotros, vosotras, os. And ellos, ellas, ustedes again s. So this is part 1. You conjugate this reflexive pronoun. Part 2 is the verb. Now the verb is conjugated in the similar way जो आप regular present tense में करते हो. अगर वो regular verbs है for example, तो er ending में हम क्या करते हैं बच्चे? We remove er and add o, as, a, amos, ais, an. With er ending o, es, e, imos, eis, en. And ir ending again o, es, e, imos, is, en. Right? ये तो आपको याद ही होगा regular present tense में आप कैसे verbs conjugate करते हो. So now let's put them together. इनको एक साथ रखते हैं and see the conjugation of the verb levantarse.
So levantar se is to get up in the morning. Okay. So see, what have I done? मैंने 3 parts में लिखा. Sujeto, pronombre y verbo. Subject here, pronombre me. Te, se, nos, os, se. The verb levantar, I conjugated it according to the regular AR form. Removed AR, levanto, levantas, levanta, levantamos, levantáis, and levantan. So in a sentence, जब मेरे को बोलना है that I get up myself, I will write yo me levanto. You get up yourself, tú te levantas. So step by step इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए how do you actually break down and conjugate a reflexive verb in Spanish. Easy, right? So चलिए एक practice exercise हो जाए. So here I have given you some fill in the blanks. Okay? क्या करेंगे आप? You'll pause the video and try to do it yourself. So let me hide myself ताकि आपको सारे verbs दिख जाए. Take a screenshot quickly. I hope it's done. Wonderful. So जब आपके answers हो जाए, you can either Google to check or you can put it down in the comment section below and I'll check them. Rule same रहेगा. You first conjugate the pronoun at the end according to the subject and then you conjugate the verb. Okay? चल ये भी हो गया. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos? What is the difference between these verbs? When is a verb reflexive? When is it non-reflexive? Again, so in case of non-reflexive verbs, बच्चों, object in the sentence will be the receiver of the action. Reflexive verbs में subject will be the receiver. Let's look at an example. I'm taking the verb lavar, which means to wash. I say lavo el coche. So I wash the car. यहाँ पे object is the receiver of the action. So इसीलिए यहाँ पर मैंने reflexive pronoun use नहीं किया while writing the sentence. Whereas when I use the verb lavarse and say me lavo los manos, I wash my hands myself. Okay, so हाथ मेरे ही है ना. ये मत बोलना कि मैम ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन तो हाथ धुल रहे हैं, पर हाथ तो मेरे हैं. So I wash my hands myself. इसीलिए मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं यूज किया. Me lavo los manos. Okay, to understand that better, I have given another exercise here. 6 sentences with their English translation जो आपके लिए easy कर देंगे समझना. When to use a reflexive verb, when to use a non-reflexive verb. Again, I'm hiding myself. Take a quick screenshot. And yeah, you can check your answers on the internet. Yeah, put it down in the comment section below. I'll be happy to answer them and check. Okay. So, इसी के साथ बच्चों time आ गया है for us to move on to the last part of the video, which is mi rutina diaria, my daily routine. So one way जो reflexive verbs बहुत commonly use होते हैं in day-to-day life is with daily personal routine activities. अपनी daily personal routine activities बताने के लिए you generally use these verbs. Now इससे पहले हम ये करें, let me share one small note with you, okay? So whenever we have body parts with a reflexive verb, मतलब ये थोड़ा सा बेसिक ही है, बस ध्यान से समझना. जब भी हम किसी बॉडी पार्ट को यूज कर रहे हैं आफ्टर अ रिफ्लेक्सिव वर्ब, हम हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं इन स्पेनिश, अनलाइक इंग्लिश जहां पर आप पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करते हो. लुक एट एन एग्जांपल. Me cepillo los dientes. In English it will be I brush my teeth. टीथ के साथ मैंने एक पोजेसिव एडजेक्टिव माई यूज किया, बट इन स्पेनिश टीथ के साथ मैंने डेफिनेट आर्टिकल लोस यूज किया. ओके, सो ये आपको एक थोड़ा सा ग्रामेटिकल डिफरेंस है, वो याद रखना. सिमिलरली इफ आई से लावा ला cara, he washes his face और she washes her face. दोनों केस में हम क्या, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव वर्ब हम स्पेनिश में यूज कर रहे हैं, विद दैट रिफ्लेक्सिव वर्ब we will have a definite article and then a body.
बस एक स्मॉल नोट इसलिए बता रही हूँ कि कभी डेली रूटीन की एक्टिविटी या ट्रांसलेशन सेंटेंसेस करो तो कंफ्यूज ना। ओके, नाउ आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ कॉमन रूटीन वर्ब्स। ये वो वर्ब्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन राइटिंग योर डेली रूटीन, और मैंने उसी सीक्वेंस में दिया है। You wake up, you get up, take a bath, brush your teeth, dress up, have your breakfast, lunch, dinner, go out, then come back, rest, enjoy, go to bed and sleep। मैंने वही सीक्वेंस रखी है जो एक नॉर्मल लाइफ की डे टू डे रूटीन में होता है हम लोगों का। ओके, नाउ उसके अलावा व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, आपको वो पैराग्राफ लिखने के लिए कोहेरेंस बिल्ड करनी पड़ती है। कोहेरेंस मतलब सीक्वेंस। आप चीजें सीक्वेंस में ही तो लिखोगे ना, रैंडमली कहीं भी कुछ भी तो नहीं लिखोगे, राइट? सो कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड दैट कोहेरेंस इन योर पैराग्राफ? एंड लाइक व्हाट इज एन एक्टिविटी यू डिड फर्स्ट ऑफ ऑल? सो यू से primero. For then you have some words like luego, entonces, and then for after you use después, and finally, and for saying for finally we say finalmente. Okay, so how do you exactly write your rutina diaria? So I'm not going to give you the whole answer ऐसे ही, हाँ थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। So what have I done here? मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, बहुत इजी सा है। ओके, मैंने सारे वर्ब्स ब्रैकेट में रखे हैं ताकि आप उसे अपने हिसाब से कॉन्जुगेट करो। ज्यादातर वो यो फॉर्म में ही होंगे कॉन्जुगेट। ओके, बस सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। एंड जहां जहां मैंने थोड़े से ब्लैंक्स दिए थे, एक आध जगह ही है, वहां पर आपको टाइम लिखना है। टू मेक योर लाइफ इजी मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे दिया है ताकि आप साथ साथ उसे स्पेनिश में आसानी से समझ पाओ। सो primero, first of all, I wake up at 7 a.m. So I will use me, and for despertar it is despierto. Primero me despierto a las 7. Me levanto, आँख तो मेरी 7 बजे खुल जाती है, but then I wake up from the bed, like I get up, sorry, and then I get up from the bed after 15 minutes. So इस तरह से I have created the paragraphs. So ये first half है where we finish till what you do in school, and next page पे you have the second half. So इन दोनों halves को मिला के your complete rutina diaria is complete. Here you go. So this should be your answer key. समझदार बन के, मुझे पता है ये स्क्रीनशॉट ले लोगे, बट थोड़ा एफर्ट करना हो, थोड़ा वेरिएशन लाना हो, थोड़ा ये देखना हो कि क्या आपको वर्ब्स कॉन्जुगेट करनी आ गई है, तो अपने आप से ही कोशिश कर लें। ठीक है? So with this we complete today's topic, kids. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Adios. I'll see you next week with new grammar topics. Okay? Adios.